In today's day and age, podcasts have become a very, very big thing. Everybody is starting a podcast of their own, and you as creators might get an opportunity to do podcasts for others. And for any podcast to be successful, you need amazing sound because you need it for video and for audio. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं that what are the different solutions that you can use as a creator if you're doing podcast for yourself or even if you're doing it for others. Welcome to Shoot Guru Tech Talks. Let's begin. So as a creator, आपके पास साउंड रिकॉर्ड करने के आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट पॉडकास्ट के लिए एक सबसे कॉमन चीज है दैट यू सी पॉडकास्ट माइक. यू नीड अ प्रोफेशनल sound or a professional mic to make your podcast look more professional and also sound professional as well. आज के डेट में there are multiple brands available in the market from a very, very high end to an entry level mic, and you get very, very cheap mics as well. But the most common and very good quality mic that is available is this mic. This is the Rode Podmic. ये एक बहुत ही well built mic है for podcast, but इसमें दो versions आते हैं. एक XLR के साथ आता है और एक USB के साथ आता है. Of course, you can use the USB version to record the sound onto your laptop or your computer, and you can use the XLR outs onto a mixer, Podcaster Pro or anything, and then record the sound separately. इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सब लोग फेस करते हैं कि लोगों को ये साउंड बाद में जाके सिंक करनी पड़ती है विद द वीडियो. अब for a professional who is doing this professionally, regularly, for somebody, it is easy to do all of that. Well, you will not have a problem. But if you're a creator who has budget constraints, who has constraints in doing editing, you have maybe you're not doing editing yourself, you're outsourcing it, तो आपको ऐसी options चाहिए जिसमें आप sound को sync कर सकें अपने कैमरा के साथ. तो हम इस वीडियो में 3 setups के बारे में बात करने जा रहे हैं. पहला setup will be with this mic itself, but I will show you how you can actually turn this wired mic into a wireless solution. Second will be a pure wireless solution, but very, very high quality. And a third will be an affordable solution. So all these hacks are something that I personally use in all my podcast shoots, और आप भी यूज कर सकते हैं to get amazing results. So इस solution में हम आपके basic podcast mic को wireless में convert करेंगे. ये mic usually wired होते हैं. मैंने जैसे बताया दो variations, एक XLR variations which is a balanced sound और USB वेरिएशन जो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आउटपुट देता है. इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, मगर आपको सेटअप और बड़ा हो जाएगा एंड बिकम्स वेरी, वेरी मोर एक्सपेंसिव. यू नीड आइदर मिक्सर्स और यू नीड एक्सटर्नल रिकॉर्डर्स, एंड इफ यू डू इट इनटू द लैपटॉप, देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट गेट दैट क्वालिटी ऑफ साउंड, और बाद में जाके आपका एडिटिंग में एक प्रोसेस भी ऐड हो जाता है. एक सोल्यूशन जो हमने निकाला जो हमारे लिए बहुत अमेजिंग रहा और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उसके लिए हमें चाहिए है आपका Rode Podmic, which is this. We got a set of 2. We got this here. This is the Hollyland Lark Max. This is actually 2:1 transmitter receiver, और इसके ट्रांसमीटर में एक बहुत अच्छी चीज क्या है, इसमें आपको मिलता है 3.5 mm jack 1. Second, इसके अंदर internal recording है, so you get a very, very high quality audio recorded directly onto this. And of course, you have a receiver that goes into your camera, तो आपका लाइव सिंक होता है, ऑन सेट सिंक होता है. आपको बाद में पोस्ट में जाके उसको सिंक करने की जरूरत नहीं है. बट इस चीज को सक्सेसफुल करने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल एंटिटी इन्वॉल्व करी है इसमें, विच इज एन XLR to 3.5 mm जैक वायर. तो बेसिकली ये वाली वायर जाती है इसके अंदर. So I have a balanced out coming here, but I convert that balanced out into 3.5 mm and get onto this transmitter. I know साउंड एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये बोलेंगे आप वायर में चेंज कर दिया, आपने 3.5 mm जैक में ले गए हो, तो यू हैव रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ साउंड. बट दिस इज अ हैक दैट वी हैव डन टू मेक योर लाइफ इजी. दो बेनिफिट होते हैं. एक, आपको एक वायरलेस आउटपुट मिल जाता है so that you don't have to pull wires from the mics to the cameras. Second, I'm using the Lark Max which has internal recording. It is very, very high quality internal recording जो कि रिसीवर से कंट्रोल हो जाती है. इसमें नॉइज कैंसिलेशन है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इस सेटअप में मैं साउंड के लिए यहाँ पे एक लेपेल माइक यूज कर रहा हूँ. दिस इज द Lark M2. इसके थ्रू साउंड अभी डायरेक्टली कैमरा पे जा रहा है. अब मैं क्या करूंगा, मैं इस माइक को सेटअप करूंगा लाइक अ पॉडकास्ट माइक, एंड आई एम गोना शो यू द रिजल्ट ऑफ व्हाट दिस डज एंड व्हाट इज द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस
माइक्रोफोन। मेरा पॉडकास्ट माइक्स के साथ एक बहुत बेसिक इशू हमेशा ये रहा है कि इनको केबल्स चाहिए टू गेट द साउंड आउट। यू नीड एन एक्सटर्नल रिकॉर्डर और यू नीड टू पुट इट इनटू योर लैपटॉप, एंड वो सारी केबल मैनेजमेंट ऑन अ पॉडकास्ट सेट कैन एक्चुअली बी अ वेरी वेरी बिग हैसल। तो उस चीज को ईजी करने के लिए हमने सोचा व्हाई नॉट मेक ऑल ऑफ दिस वायरलेस। तो अभी इस सेटअप में मैंने यहाँ पे Podmic लगा रखा है, which is from Rode, which is the most common podcast mic being used by literally everybody. Second, we've attached an XLR to 3.5 mm cable, और उसके एंड पे मैंने यहाँ पे डाला है Lark Max, which has internal recording and which has noise cancellation. This is very very high quality recorder right here, which is making it wireless. ये अपने आप में भी एक mic है, but we are not using that facility right now. We are actually using the 3.5 mm jack in this, and this is acting as a transmitter, and there is a receiver connected to the camera which is recording the sound onto the camera itself, so I'm getting a sync sound. इसके अंदर यहाँ पे साइड में record button दिया गया, so I can start stop recording from here also. But जो इसका receiver है, that has an interface that allows me to start and stop recording from the camera itself, so that my cameraman does not have to go move around the set at all. They can do this all wirelessly. Now अभी इस टाइम पे जो settings हो रखी हैं, उन settings में there is no additional effects like no noise cancellation, nothing. So this is the sound quality when the noise cancellation is turned off. Now let's turn it on. And now this is the sound quality when the noise cancellation is turned on. So basically आपके podcast mics, आपके condenser mics में ये capability नहीं होती of noise cancellation, which I know is a digital interface or an add-on on any sound. मगर ये एक facility है if you're shooting in environments that are not soundproof, that are not studios, that are not done for podcasts or sound recording, तब आपको ये बहुत ज़्यादा benefit करेगा. And of course the sound files coming out of this are of very very high quality, so you can use them in any kind of setup and any kind of shoot as well. I have been using this a lot for my clients and they have been very happy. The podcasts outputs have gone on Spotify, iTunes, everywhere, and they're also available on YouTube on the video itself. And the editors are so happy because they get a pre-synced sound, तो उनको अलग से sound sync करने की जरूरत नहीं पड़ती है. And सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज जो मेरे को लगती है कि मेरे कैमरा पे तो एक सिंक साउंड रिकॉर्ड हो ही रहा है, मगर यहाँ पे मेरे को एक बैकअप फाइल मिल रही है, सो दैट इफ खुदा ना खास्ता कुछ भी स्क्रू अप होता है, मेरे पास ऑडियो का एक बैकअप है जो कि डायरेक्टली इस ट्रांसमीटर में रिकॉर्ड हो रहा है, एंड दैट ऑल्सो इज ऑफ वेरी वेरी हाई क्वालिटी. सो दिस इज माई फर्स्ट सेटअप वेयर आई एम कन्वर्टिंग अ पॉडकास्ट माइक, a रियल पॉडकास्ट माइक into a wireless podcast mic and still getting a very good quality sound. Let's move to the next setup. इस setup में हम लोग बात करने जा रहे हैं about a solution that will give you a very high quality sound but without very expensive pod mics or podcast mics or any condenser mics. ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, this is a dummy mic. This is only a 1100 rupees mic or maybe a $12 mic. ये आपको Amazon पे कहीं पे भी मिल जाता है, which is like dirt cheap. इसके साथ best bit क्या है, आपको एक mic holder मिलता है, उसके ऊपर एक pop filter मिलता है. So you're kind of getting the whole package. इसको high quality wireless mic में convert करने के लिए मैं use कर रहा हूँ Lark Max again. तो इसका जो hack हमने निकाला है उसको मैं पहले setup करके दिखाऊंगा, फिर उसका actual sound दिखाएंगे. अभी sound Lark M2 के through आ रहा है, which is the lapel over here. So इस setup के लिए what I do is I take the Lark Max का transmitter. This also has a mic inbuilt in it. That is why I love it. I take the pop filter off, put the mic in, give it a very cozy setting ताकि वो हिले ना कुछ भी, and then मेकिंग श्योर कि माइक की जो पोजीशन है इट इज पॉइंटिंग द चेस्ट. आप एक चीज प्लीज याद रखिएगा, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी आवाज हमारी चेस्ट से आती है, मुंह से नहीं आती है. सो एनी माइक दैट यू आर यूजिंग शुड बी पॉइंटिंग टू द चेस्ट, एंड दिस इज व्हाई आई पर्सनली डोंट वर्क विद पॉडकास्ट माइक्स दैट मच, बिकॉज उसमें जब डायरेक्ट आवाज आती है तो पॉपिंग आवाज या फिर हवा की आवाज बहुत ज्यादा आती है. सो दिस अलाउज मी टू डू दैट. सो आई विल पॉइंट द माइक डाउन एंड देन आई विल पुट इट ओवर हियर. तो अब ये एक वायरलेस सोल्यूशन बन गया है फ्रॉम अ डमी condenser mic. I have a wireless mic over here and now we'll turn it on and see what the results are. So अब जो आप साउंड सुन रहे हैं वो एक्चुअली में Lark Max के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है. इस पूरे सेटअप के अंदर हमने आपके सामने Lark Max लगाया है, मेरे ऊपर कोई और माइक नहीं है. एंड Lark Max में मेरे को अब बेनिफिट क्या मिल रहा है कि मैंने इस डमी माइक्रोफोन को वायरलेस में कन्वर्ट कर दिया, बट इट स्टिल लुक्स लाइक अ पॉडकास्ट माइक. इट इज स्टिल गिविंग मी दैट फील, लुक एंड एवरीथिंग दैट आई नीड फॉर अ पॉडकास्ट सेटअप. एंड और तो और वो सारे फीचर्स विच इज इंटरनल रिकॉर्डिंग,
noise cancellation and the wireless features I am getting because of the Lark Max inside. That is giving me a professional level sound which can easily be used for audio and video podcasts. Abhi jo sound record ho rahi hai, that is without noise cancellation. Let's turn on noise cancellation and see the difference. So अब आप सुन पा रहे हैं कि जो अब sound record हो रहा है, that is with noise cancellation. The sound has gone quieter, the ambient sound has reduced. But एक चीज याद रखिएगा, अगर आप इस माइक को बिना वायर के लगाएंगे, so it looks very funny. I still have the wire here which I will insert and make it look more professional on a podcast setup. And the internal recording in the Lark Max allows me to record very high quality sound as a backup track. I believe this can work for any professional setup. But again, this is still an expensive setup because the Lark Max is on a higher professional end. But if you're really serious about good quality sound for any of your podcast clients or even for yourself, this is the kind of setup that you can build a wireless podcast mic setup for your sound. Now let's see the third setup. So in this setup, I'm going to give you a very, very affordable solution to record very good quality sound for any podcast and still make them look ultra professional, ultra pro, and you will not regret it. So iske liye hum use karne ja rahe hain, of course, a dummy mic. This mic is only for 1100 rupees or $12 on Amazon. I am going to use a dummy cable, but mic ke case mein main use kar raha hu the Lark M2. Abhi yahan pe wo yahan se record kar raha hai, meri chest se record kar raha hai, but हम इसको इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे. So what I'm going to do is I'm going to take this mic and put it onto this podcast mic. तो उसके लिए I'm going to take the pop filter off. और इसके मैग्नेट से बेस्ट चीज़ है ये चिपक गया है यहाँ पे, तो ये गिरेगा नहीं. अगेन जो माइक की डायरेक्शन है उसको नीचे की तरफ रखेंगे so that the sound that is coming from your chest and not your mouth. तो वो wind capturing कम हो जाती है. But ये pop filter helps us a lot and I put this on top. अब ये एक वायरलेस पॉडकास्ट माइक सेटअप बन गया. लेट्स सी द रिजल्ट. सो अब जो आवाज आप सुन रहे हैं दैट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द माइक विच हैज बीन पुट ऑन दिस पॉडकास्ट माइक. यू कैन कंट्रोल नॉइज कैंसलेशन फ्रॉम द वायरलेस रिसीवर. यू कैन कंट्रोल द audio levels from the wireless receiver and you can get amazing results. And then of course managing the sound on the camera and syncing it directly onto the video. Abhi since noise cancellation off hai to ye sound aa raha hai, let's turn the noise cancellation on. Now we've turned on the noise cancellation, you can actually hear the difference. Ye mere ko sabse amazing cheez lagti hai is mic ke bare mein. It is tiny, it is good quality. Of course it is not a 32-bit float, but for entry level podcasts, for run and gun, for everything, this is a decent sound. I have been using it for my podcast as well. I have been using it for clients as well. So you move from a very expensive podcast mic setup with a lot of mixers and everything to a podcast mic converted into a wireless setup, then directly recording onto a wireless mic with a recorder inbuilt and extended through a camera, and now an affordable mic solution that makes your podcast recording much easier and gives you high quality sound. So depending on your budgets, depending on your solutions, depending on your requirements, please choose the kind of setup that you need. You can always experiment, try permutations and combinations. If you find a better solution to this, put it in the comments below. We will see that and we will check that out as well. This is my hack. This is what I have been doing. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe. Until next time, ciao.